ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચને લઈને ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। ભારતીય ટીમ જીતશે તેવી ક્રિકેટ પ્રેમીઓને આશા છે। ક્રિકેટ પ્રેમી અરુણ હરિયાણવી અને તેના મિત્ર અનિલે અલગ રીતે વ્યક્ત કર્યો ઉત્સાહ। શરીર પર ચિતરાવ્યા ભારત પાકિસ્તાનના ધ્વજ। પાકિસ્તાનને દીકરા તરીકે અને ભારતને પિતા તરીકે દર્શાવ્યો। રિવરફ્રન્ટ પર ઉભા રહેલા બંનેએ જમાવ્યું અનોખું આકર્ષણ। ભારતીય ટીમની ક્રિકેટ મેચ હોય જેને લઈને ક્રિકેટ રસિકોમાં ઉત્સાહ હોય, પરંતુ જ્યારે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ હોય ત્યારે આ ઉત્સાહમાં બમણો વધારો થાય અને તેમાં પણ દરેક ભારતીયને ભારતીય ટીમની જીતની આશા હોય। ત્યારે આજે જ્યારે દુબઈમાં ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ છે ત્યારે દરેક ખેલાડીમાં એક અલગ ઉત્સાહ છે અને અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ ખાતેના દ્રશ્યો કે જ્યાં આ અરુણ હરિયાણી જે દર મેચમાં જે ભારતની મેચ હોય ત્યારે આ રીતે પોતાના શરીર ઉપર રાષ્ટ્રધ્વજ જે છે તે ચિતરાવે છે અને સાથે જ તેમના મિત્ર જે અનિલ છે તે પાકિસ્તાનનો ઝંડો તેમને અહીંયા પોતાના શરીર ઉપર ચિતરાવ્યો છે અને એક મેસેજ આપવાનો પ્રયાસ તેઓ કરી રહ્યા છે। અરુણજી, शू एक मैसेज क्या आप मैसेज देना चाह रहे हो आज की मैच के लिए? तो भारत और पाकिस्तान जब भी मैच होता है ना, खाली बैट बॉल का नहीं होता, उससे भी बड़ा मैच होता है। और मैं आपको बता दूं, पहले दिन उन्होंने जो हरकत की, हमारा तिरंगा नहीं लगाया गया था, उसके बाद लगाया गया था, तो पाकिस्तान ने बच्चों की तरह हरकत की थी। तो हमने एक थीम बनाई है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। तो उन्होंने हरकत की थी और सबको मालूम पड़ गया अभी बेटा बेटा ही रहेगा। कैसा बेटा बनके कैसा लग रहा है? ऐसे तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, पर पाकिस्तान वाले जो मैं हूँ अभी तो बेटा ही हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो हरकतें करते हैं पाकिस्तान वाले वो बंद कर दे, और जैसे हिंदुस्तान वाले हाथ जोड़ के सलाम करते हो आप, हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के विनती है, हाथ ही जोड़ो, हरकतें मत करो बच्चों की तरह। क्या लगता है अरुण जी, आज की मैच में किस खिलाड़ी का कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है? जो शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्म है। जब मैं अहमदाबाद में इंग्लैंड के सामने था तभी भी उन्होंने सेंचुरी मारी थी, उसके बाद दूसरी सेंचुरी मारी थी और मैं तीसरी सेंचुरी का भी इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है जबरदस्त फॉर्म में है, तो मैं चाहूंगा पाकिस्तान के भी सामने सेंचुरी मारे। और विराट कोहली भी यहाँ पर 50 रन मारी थी और रोहित शर्मा ने उस सीरीज में ही 100 रन बनाए थे। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक मैसेज दे दिया है भाई कि हम सो नहीं रहे, हम जाग रहे हैं। और हमारी जो बॉलर है, बॉलर आप जबरदस्त, आप देखो जबरदस्त बॉलिंग, अक्षर पटेल है, जबरदस्त एक फॉर्म में। मैं बस बॉलरों को कहना चाहूंगा पाकिस्तान को उड़ा दो, यानी मेरा ये मतलब नहीं है तो उनको मारो, यानी उनके स्टेम उड़ा दो। 2017 तब भी भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुई थी, वो माहौल और अब का माहौल क्या? इस बार जबरदस्त माहौल है। 2017 का बदला हम लेंगे भी, इस बार हम लेंगे। और मैं आपको बात बताता हूँ, जिस हिसाब से दुबई में पाकिस्तान की टीम रुकी हुई है, अगर मैच हारता है तो उसके बाद तीसरी मैच उनके साथ बांग्लादेश के है। तो मेरे को लगता नहीं है कि पाकिस्तान अपने पाकिस्तान में जाएगा। एक्चुअली बांग्लादेश को बोलेगा तू है ना दुबई में आ, हमको यहाँ पर खेलने का, हमको अभी पाकिस्तान से ही डर लगता है। पाकिस्तान वाले डरेंगे, खाली ये मैच हारने दो उनको। क्या लगता है स्कोर क्या रहने वाला है? इंडिया का जिस हिसाब से फॉर्म में चला है, रोहित शर्मा भी जबरदस्त फॉर्म में, मैं चाहूंगा 300 के ऊपर जाना चाहिए। जिस हिसाब से जबरदस्त फॉर्म में टीम, पूरी टीम फॉर्म में है। એટલે કે પૂરી ટીમ ફોર્મમાં છે ને સાથે દર્શકો પણ એટલા જ ફોર્મમાં છે અને એમાં પણ ભારત પાકિસ્તાનની મેચ એ પણ દુબઈમાં। આમ તો પાકિસ્તાન જે છે આ મેચને હોસ્ટ કરી રહ્યું છે, પરંતુ ભારતીય ટીમ સાથેની મેચ દુબઈમાં યોજાઈ છે અને તે મેચને લઈને તમામ ખેલાડીઓમાં ઉત્સાહ છે, સાથે દર્શકોમાં પણ ઉત્સાહ છે। હવે જોવાનું એ છે કે આ મેચનું પરિણામ શું આવે છે। ભારતીયોની આશા અપેક્ષા છે કે ભારતીય ટીમ જીતે, પણ મેચ પૂર્ણ થયા બાદ તેનું પરિણામ જે છે તે સામે આવશે। પરંતુ ભારતીય મેચ જીતશે, ભારતીય ટીમ જીતશે, તે આ એક આશા દરેક લોકોની આ મેચ સાથે બંધાયેલી જોવા મળી રહી છે। કેમેરામેન નરેશ સોલંકી સાથે દર્શન રાવલ, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ।